चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा लैब 8 है। सेशन हमारा 7 चल रहा है। लैब सेशन 7 चल रहा है और लैब सेशन 7th वीक है। नेक्स्ट टाइम मिड है आपके या उससे अगले? उससे अगले। तो लैब सेशन 7 के अंदर आज हम लैब 8 करेंगे और लैब 9 करेंगे, ठीक है। और वीजू का भी कुछ कोशिश करेंगे, बीच में टाइम बच गया तो वीजू का भी एक टास्क कर लेंगे, ठीक। तो हर एक का हर लैब में कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरह आपका ये है, पिछलों का कुछ पीछे है, कुछ आगे है। तो अपने लैब मैनुअल में अकॉर्डिंगली आप उसको लिखते रहिएगा। अच्छा, लैब 8 है हमारी। ये भी मॉडिफाई कमांड लैब 8 जो है वो हमारी है लेयर के हवाले से। कंस्ट्रक्ट द ड्राइंग यूजिंग ऑटोकैड। अच्छा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है हमारे टू डिस्क्राइब द बेसिक कांसेप्ट, डिफरेंट मोड्स ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लेयर्स। असल में हम लेयर्स को देखना है आज, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स जो है आप कैसे बना सकते हैं। ये हमारा लैब 8 के अंदर सारा लेयर्स का ही है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑन ऑफ कैसे करना है लेयर को, और लॉक, फ्रीज, और उसको आपने उसकी लाइन की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है। मतलब एक लेयर आप बनाते हैं डायमेंशन लेयर, उसका नाम लिख देते हैं डायमेंशन। पीछे हम पहले जो काम कर रहे थे ना, सारा हमने में काम कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट लेयर जो इधर आप दिखाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट लेयर के अंदर हम डायमेंशन भी उसी में कर रहे थे, ड्रा भी उधर ही करते थे, हिडन लाइंस भी उधर ही बनाते थे, सर्कल का सेंटर है तो उधर ड्रा करते, एक ही लेयर में सारा कुछ हो रहा था। अब हम उसको बस स्प्लिट करेंगे आज, ठीक है। तो अब आप ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने हिडन लाइंस बनानी है तो उसकी हिडन लेयर बना लें, हिडन के नाम से बना लें फॉर एग्जांपल। अच्छा, आपने रेक्टेंगल्स बनानी है फॉर एग्जांपल, तो रेक्टेंगल्स की एक लेयर बना लें। अब उस लेयर को आप हाइड करेंगे या फ्रीज करेंगे या लॉक करेंगे तो फिर रेक्टेंगल सारी लॉक हो जाएंगी। उसका कलर चेंज करेंगे तो सारी रेक्टेंगल का कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह आप जो है ना, लेयर्स का हमारा ये फायदा है। मतलब डोर्स है तो डोर, सारी डोर्स का आप एक लेयर बना लें। अब आपके ऊपर है, तो डोर्स का लिख दें, डोर लेयर्स का नाम भी डोर लिख दें। तो जितने भी डोर्स हैं आप उसको प्रिंटिंग में फॉर एग्जांपल लेयर की जो सिग्निफिकेंस है, प्रिंटिंग में फॉर एग्जांपल आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि डोर नजर ना आए, तो आप लेयर जो डोर वाली लेयर है उसको आप हाइड कर देंगे या लॉक कर देंगे, या प्रिंट वाला ऑप्शन है उसके प्रिंट के ऑप्शन को अनप्रिंट वाला ऑप्शन उसमें मैं बताता हूँ, उसमें करेंगे तो फिर ये होगा कि आप जब प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, आपकी वो डोर्स नहीं आएंगे। इस तरह डायमेंशन है तो डायमेंशन शुरू में आपको चाहिए होती है, तो डायमेंशन की, और उसके बाद आखिर में हमें डायमेंशन नहीं चाहिए, हमें फाइनल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप डायमेंशन लेयर को आखिर में ऑफ कर बजाय इसको डिलीट करें, या वैसे ये बाद में चाहिए भी होगी डायमेंशन, तो कलर चेंज करना है डायमेंशन का, इकट्ठा ही उस लेयर में जाएं, डायमेंशन की लेयर में, वहां जाकर कलर चेंज, लाइन का साइज चेंज करना है, वेट चेंज करना है डायमेंशन का, तो आप डायमेंशन में जाएं, डायमेंशन वाली लेयर सेलेक्ट करें और वहां जाके सारी प्रॉपर्टी चेंज करें, अचानक सारी जो है ना इकट्ठी वो चेंज हो जाएंगी। इस तरह आप जो है वो क्या करेंगे, तो लॉक कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने डायमेंशन लेयर को लॉक कर दिया, जब आप पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की कोशिश करेंगे सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, सारी लेयर डायमेंशन वाली नहीं होंगी। सही है, तो इस तरह की चीजें जो है आज हम इस पे करेंगे लैब 8 में। तो लेयर्स के ऊपर फोकस है आज, और उसके बाद फिर हम लैब 8 के अंदर जो है ना आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे कि एक 3D ऑब्जेक्ट होकर, अब हम 3D की तरफ जाना चाह रहे हैं आज ऐसा, ठीक है। तो लैब से पहले पहले हम 3D की थोड़ा सा उसका देख लें, आइसोमेट्रिक व्यू, उसका फ्रंट व्यू क्या होता है, कोई 3D बड़ा होगा बस। असल में हमारा एजेंडा ये है कि मिसाल तौर पर ये पानी की बोतल बड़ी है ना, तो मैंने फिर आपको यही कहना है कि जब ये 3D हम करेंगे तो उसके जो व्यूज बनेंगे ना, फ्रंट टॉप व्यू या प्लेन्स को कहते हैं, और इसके बाद राइट व्यू या लेफ्ट व्यू, तो ये जो है फिर इसको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम ये भी लैब 9 में देखेंगे। तो उसके अंदर फर्स्ट एंगल हम हमारे इंडिया में, हमारे रीजन में यूज होती है, यूरोप में यूज होती है। थर्ड एंगल है तो वो अमेरिका या यूके में यूज होती है। तो उसमें फर्क कोई नहीं है, बस जगह का चेंज है कि फ्रंट व्यू किधर रखना है, बॉटम किधर, फ्रंट टॉप किधर रखना है, फ्रंट किधर रखना है, लेफ्ट और राइट किधर रखना है, बस इसका फर्क है, ठीक है। फर्स्ट एंगल और थर्ड वो आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। तो उसमें फिर मकसद ये है कि हमारा फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप भी मेरा खुला हुआ है, तो मैं इस वक्त इसके फ्रंट पे हूँ, तो फ्रंट व्यू इसका क्या है, तो आप फ्रंट व्यू बनाएंगे। फिर इसका साइड व्यू, एल शेप आ रही है साइड की इधर। तो इस तरह के कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो है ना, इनका आप व्यू बनाए, उसकी डायमेंशन भी खुद लेनी, वर्नियर कैलिपर आपके पास होना चाहिए या कोई डायमेंशन लेने के लिए जो भी आप लेना चाहें। इस तरह माउस है तो इसका फ्रंट व्यू, तो इस तरह फिजिकल ऑब्जेक्ट भी आप जो है वो लैब रिपोर्ट्स के अंदर इनके फ्रंट व्यू लिखेंगे, सही है, बनाएंगे फिर, ठीक है। तो इस तरीके से घर की कोई एग्जाम्पल रियल टाइम लेके उसकी तस्वीर बनाए और बना के फिर उसका फ्रंट और इस तरह के व्यूज जो है वो सारे बनाते हैं। अच्छा चलें लेयर्स पे चलते हैं। लेयर्स बनाने के लिए ना सबसे पहले देखें तो आपको ना ये है इधर आपके पास ऑप्शन, ये वाला लेयर प्रॉपर्टी के साथ, ये जो बाय डिफॉल्ट आ रही है लेयर,
बाय डिफॉल्ट लेयर जो है ना इसके ऊपर रखेंगे तो ये लेयर शो करता है ना। अच्छा ये तो बाद में ओपन होगी, नहीं इसको नहीं करना इससे पहले। अच्छा चले इसी को ओपन कर लें, चले इसी को ओपन करें। हाँ ये आ रहा है ना ये, इसको एरो पे क्लिक करें, ये जो साइड नहीं राइट राइट पे, हाँ यही आ रहा है। हाँ ये देखें ये एरो आ रहा है, ये ठीक है ना, ये लेयर है हमारी बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है, ठीक है। इसमें कलर देखें तो कलर व्हाइट है, इसलिए जो भी हमने ड्राइंग की है अभी तक वो व्हाइट कलर में होती थी क्योंकि इसकी लेयर का कलर ही व्हाइट है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट लेयर जीरो लेयर के नाम से AutoCAD के अंदर, अब हमने इसमें लेयर्स मजीद ऐड करते हैं। अब हम सबसे पहले रैंडम ही बनाएंगे, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो हम फॉर एग्जांपल हम सादा सा काम करते हैं, सर्कल्स की लेयर बना लेते हैं, सर्कल ज़्यादा करते हैं, रिक्टेंगल्स की लेयर बना लेते हैं, फिर डायमेंशन की लेयर बनाते हैं, इनको डायमेंशन करेंगे, डायमेंशन की जो अभी तक बनाया हमने। और इस तरह जो है ना वो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। चले फॉर एग्जांपल हम जो है वो ये करते हैं कि पहले लेयर की प्रॉपर्टीज में जाए, जिस तरह अभी गए हैं। ये किधर से गए थे, इधर तो ये सामने लेयर प्रॉपर्टीज है, इस पर क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन उधर जो है ये देखें, इधर फॉर्मेट में जाके आपने लेयर्स में जाना है, ठीक है। इधर भी फॉर्मेट में लेयर होगी, ये देखें लेयर्स में इस तरफ जाके आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेयर है आपकी, ठीक है। अच्छा अब आप ये करते हैं कि इस लेयर्स के अंदर अगर आप ऑप्शन देखें ना, ये विंडो ओपन होगी सबकी। अच्छा चले इसके ऊपर ना ये ऑप्शन है एक, देखें एक न्यू लेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो विंडो ओपन हो जाएगी, कहेगा उसका जो है न्यू लेयर। ये Alt+N से भी आप बना सकते हैं डायरेक्ट, अगर शॉर्टकट है तो। ये न्यू लेयर आप क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर आ जाएगी, ठीक है। इससे अगली देखें, अगला क्या ऑप्शन है, न्यू लेयर वीपी फ्रोजन इन ऑल व्यू पॉइंट्स। ये न्यू लेयर वीपी फ्रोजन है। उसके बाद ये फ्रोजन का हमें अभी फिलहाल यूज नहीं, वो कहीं आया तो हम देखेंगे। फिलहाल न्यू लेयर बनानी है, उसके बाद डिलीट लेयर, डिलीट कैसे करनी है, ये डिलीट करनी है, ठीक है। ये दो चीजें, और सेट करंट ये तीसरा ऑप्शन, ये भी यूज करेंगे। सेट करंट यानी जो लेयर आपने यूज करनी है उसको फिर सेट करंट कर दे तो वो बाय डिफॉल्ट, जिस तरह हम वो डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाते थे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में तो सेट करंट करते थे जो भी हम, तो इसी तरह इधर भी हमने लेयर जो भी यूज करनी है उसको सेट करंट। अच्छा अब हम चले लेयर्स बनाते हैं, पहले इस पे क्लिक करें जरा, न्यू किया, लेयर वन बाय डिफॉल्ट आएगा। हम इसको कहते हैं कि ये हमारी सर्कल की लेयर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ सर्कल। हम कई सर्कल ड्रा करेंगे और उनको हम जो है ना वो सर्कल के नाम से बना देते हैं। हाँ इस पे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, अगर इस तरह नहीं हो रही ना। ये देखिए इस पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम का ऑप्शन भी होता है, यहाँ से रीनेम कर लें। पहले न्यू में जाए, पहले न्यू में। हाँ इस पे जो है ना ये राइट क्लिक करें, रीनेम करें, न्यू लेयर। हाँ राइट क्लिक करें, राइट न्यू लेयर पे क्लिक करें, न्यू लेयर, इसके अंदर ही जो ऑप्शन है न्यू लेयर। क्या कह रहे हैं, ऊंचा बोल, मैंने समझ नहीं आ रही। ये इधर आ रहा है यार, यही तो उधर है यार ये नजर नहीं आ रहा लग बंदे, इसको थोड़ा सा उसको सेट करें ना इधर से, इसकी यही। चले नहीं आ रहा तो समझ तो आ रही है, कहाँ से क्लिक कर रहा है, अंदाजा तो हो रहा है ना, तो बस कर ले अपना। पहले काम किया हो तो पता हो ना, काम पहले काम किया है तो आपको अंदाजा हो रहा है ना कहाँ से कहाँ क्या क्लिक कर रहा है, मैं बता भी रहा हूँ साथ। लेयर का नाम चेंज हुआ, लेयर का नाम चेंज करे, किसी का होता है तो हाथ खड़ा करें जरा। वेरी गुड, सब हो गया काम, पे नहीं हुआ है यार, उनसे पूछ लो जाके। नहीं इस पे नहीं, 2007 पे नहीं होता सर, न्यू लेयर बनाया उसका नाम चेंज करें, उसको सर्कल का नाम दे देंगे। अच्छा किसको न्यू लेयर का नाम सर्कल रख लिया सबने, किस किसने रख लिया। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं 2007 में किया है इन्होंने। अच्छा लैपटॉप पे नहीं, नहीं लैपटॉप पे नहीं, जिसने इस पीसी पे किया वो हाथ खड़ा करें, जाके देख के आए। कैसे किया, ये बना लिया आपने, वो ऑटो कैड की उस पे फाइबर पे, किस किसने बनाई है। वेरी गुड, तो ठीक है।
उसको फिर मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर लें फाइल तो ताकि हर वक्त काम रहे। कोई आटे साटे को ऑनलाइन होंगे तो फिर आपका तो आपकी ताकि आप ऑनलाइन इस रहे तो आपकी रैंकिंग थोड़ी आपको चाहिए। सर जी रैंडम है 3-4 दफा क्लिक करें तो आ जाता है। एक मिनट मुझे ये अब आ गया 6 दफा क्लिक 6 दफा करने से आया कि ये 2 दफा करने से जैसे आता है कर ले बस। अच्छा सर्कल लिख दिया इसको, ठीक है लिख दिया सर्कल। सर्कल की लेयर बना ली हमने, ठीक है। अच्छा अब आप इस सर्कल में ना ये देखें इसके ऊपर ना वाइट कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएंगे सारे। आप इसका रेड कर लें, फॉर एग्जांपल हम रेड कर लेते हैं, ओके रेड हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी लाइन हम सर्कल की वैसे तो लाइन सिंपल ही होती है कंटिन्यूस, इस कंटिन्यूस पे क्लिक करें और देखें ये लाइन सिर्फ कंटिन्यूस सॉलिड लाइन आ रही है। इसको लोड करें, यहाँ लोड करके यहाँ से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम इससे वैसे सर्कल ऐसे ही होता है लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए कि सेंटर लाइन से हम सर्कल बनाएंगे। चले सेंटर लाइन हमने क्लिक कर दी, ये दोबारा क्लोज करके दोबारा। अच्छा ये कलर क्लिक करेंगे कलर आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूस जो लाइन है ना, लाइन टाइप पर लिखा भी हुआ है तो उसके नीचे जो कंटिन्यूस है ना इस लेयर की सामने जो है उस पर क्लिक करेंगे, ये आएगा। यहाँ लोड करें जो भी लाइन की इस लेयर में जो जो चीज आपने बनानी है वो जिस लाइन से बनानी है वो इधर क्लिक कर दें, ठीक है। मैंने सेंटर लाइन कर दिया फॉर एग्जांपल, ओके। और फिर इस सेंटर लाइन को क्लिक करें फिर ओके करना है, ठीक है। हाँ इधर भी सेंटर लाइन को क्लिक करना है, ओके करना है। चले सेंटर लाइन भी होगी। अब अच्छा इसमें लाइन वेट देखें, लाइन वेट, लाइन वेट पे क्लिक करें। ये बाय डिफॉल्ट जो है ना डिफॉल्ट आ रहा है, इसको नीचे ले जाएं। मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 mm हो जाए, 1 mm मोटा साइज हो लाइन वेट 1 mm। तो ये 1 mm कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। हो गया सारा, हो गया। हाँ कंटिन्यूस पे क्लिक करें तो नीचे एक विंडो खुलेगी, उसके अंदर कंटिन्यूस लाइन ही होगी सिर्फ, ऐसी है ना। उससे नीचे उसी विंडो में नीचे लोड का ऑप्शन आएगा, लोड का। उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे ना मल्टीपल लाइंस आ जाएंगी, उसमें कोई लाइन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए सर्कल के लिए सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लिया, हालांकि ये इलीगल है लेकिन बहरहाल वैसे समझने के लिए, ठीक है। तो ये हम सारे सर्कल जो है ना सेंटर लाइन से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो है ना ये सेंटर का हमने, और इसके बाद आप लाइन वेट जो ऊपर लिखा हुआ है लाइन वेट के नीचे क्लिक करें तो लाइन वेट पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए विंडो ओपन होगी। उस पर आप 1 mm कर दें फॉर एग्जांपल, मोटी थिक वायर से हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को अभी नहीं छेड़ते, ये जीरो ही है, जीरो ही है ना, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं इसमें। अच्छा चले है ही नहीं, छोड़े फिर। ट्रांसपेरेंसी वही होती है कि अगर आपकी 100% हो जाए तो वो चीज नजर आना बंद हो जाएगी, पीछे बैकग्राउंड नजर आना शुरू हो जाएगा। 50% होगी तो कुछ वो नजर आ रही है, कुछ बैकग्राउंड। जीरो का मतलब है कि बिल्कुल सॉलिड नजर आ रही है, पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं नजर आएगा, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी है, तो वो हम फिलहाल हमने यूज नहीं करनी। तो ये सर्कल हमने कर लिया। इसके बाद अगेन न्यू लेयर पे क्लिक करें, न्यू लेयर पे, और ये हम रिक्टेंगल का बनाते हैं फॉर एग्जांपल, जस्ट आसान काम कर रहे हैं, वरना हम इसमें असल में चाह रहे थे कि रिक्टेंगल। अब जो अगला लेक्चर होगा ना उसमें मैं उनको प्रॉपर जो डोर है ना 2D जो ड्राइंग होती है स्टैंडर्ड, वो बनाएंगे हम, ठीक है। वो किसी अगले लेक्चर में किसी और को बना दूंगा, तो आपने वो लेक्चर उधर से देखना है। वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक। तो आपको जरा सादा कर रहा हूँ, अभी पहला लेक्चर है। दूसरा अभी ये आपके आपको अभी कर रहे हैं, उसको उनको थोड़ा आपसे एडवांस होगा, फिर अगले को उससे एडवांस, तो इसलिए वो पिछलों के साथ लिंक रहा करें, वो वीडियो शीडियो के साथ, ठीक है, वेबसाइट के साथ। अच्छा रिक्टेंगल हो गया, ठीक है। अच्छा रिक्टेंगल में इसका कलर हम रेड की बजाय कर देते हैं, ये येलो कर देते हैं, ठीक है। येलो के बाद सेंटर की बजाय हम इसको लोड करते हैं और यहाँ से हम जो है वो लाइन जो है वो डॉट वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है। डॉट वाली फॉर एग्जांपल लाइन ली और डॉट पे क्लिक करके फिर ओके करना है, ठीक है। और लाइन वेट हम इसका ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका ले लेते हैं 1.2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1.2, ठीक है। 1.2 ले लिया, बस ये भी हो गई, सही है। अब नेक्स्ट न्यू लेयर करते हैं, इसको हम कह देते हैं डायमेंशन लेयर, DIMENSION डायमेंशन। अब डायमेंशन में क्लिक करें, इसका कलर करते हैं, इसका कलर करते हैं आगे, ये अगला कलर है ग्रीन। जी क्या कह रहे हैं यार, एक सर्कल की रेक्टेंगल सर्कल की लेयर बना ली, आप रेक्टेंगल की भी इस तरह बनाओ, उनके कलर शलर चेंज कर दो बस। मेरे को लकीर के फकीर थोड़ी बनना कि जो मर्जी कर दो कलर, लाइन टाइप चेंज कर दो, लाइन ताकि जब आप बनाओ तो आपको पता चलेगा यार ये लेयर मेरी वो है, उसका थोड़ा फर्क नजर आया आपको, सही है। इससे पहले सर्कल की लेयर बना ली ना सबने, सर्कल बना रेक्टेंगल की बनाए इस तरह, और उसमें बाकी चीजें चेंज कर दें जो हमने वो ऊपर चेंज की है, कलर और कर दें इसका
इसका लाइन टाइप चेंज कर दें, लाइन वेट चेंज कर दें, 3 चीजें चेंज करनी है बस। इसके बाद तीसरी लेयर बनाएं, डायमेंशन उसके लिख दें डायमेंशन लेयर, इसका भी इसी तरह कलर चेंज कर दें। इसका जो लाइन टाइप है मैं इसको लोड करता हूँ और इसको मैंने डॉट कर दी फॉर एग्जांपल, और मैं इसको करता हूँ लाइन वेट, इसका मैं 1.2 की बजाय 1.4 कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये देखें। और अगली लेयर बनाते हैं हम, चले बात 3 ही काफी है फिलहाल। क्या कह रहे हैं? डायमेंशन लेयर, डायमेंशन हमने पहले क्या यूज किया है कि जो हमें जिसके लिए लेयर की जरूरत पड़ेगी, ट्रायंगल एलिप्स, वो भी बना सकते हैं। तो फिलहाल वो तो सादा ही है ना, वो आप रिपीट ही होगा सारी चीजें। ठीक है, तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दें, ये हमारी लेयर्स बन गई। ठीक है, ओके कर दें। है 1 पे, अच्छा इसको क्लिक करें, 1.2 करें। अच्छा वो फिर 1.2 ये इसलिए भी नहीं हो रहा, हो सकता है डॉट लाइन जो है वो उसकी भी लिमिटेशन हो गई। अब और है पर जितना हो रहा कर लें बस वो। अब डॉट लाइन कंटिन्यूस ही हो जाएगी मुझे लगता है, अगर इतनी थिकनेस बढ़ाएगा, शायद इसलिए भी कर रहा हूँ। तो बहरहाल जो भी है, जितना साइज है थोड़ा कम रख ले, खैर जितना हो रहा है बस कर, उसको थोड़ा कम कर दें ऊपर वाले को, इसको थोड़ा पॉइंट में कर दें। ठीक है, अच्छा अब आप इस पे क्लिक करें, ये इसको क्लोज कर दें और यहाँ लेयर पे क्लिक करें, ये देखें सारी लेयर्स इधर आ जाएंगी। पहले वो एक ही आ रही थी, इसको क्लोज कर दें, ओके कर दें। अच्छा, इधर देखें, इस पे क्लिक करें, ये जो बाहर आपको लेयर का ऑप्शन आ, ये देखें आप सारी लेयर जो आपकी उधर थी, जो आपने क्रिएट की, वो इधर आ गई, पहले नहीं थी इधर। ठीक है, ये आ गई, सही है। ओ सॉरी, ओ किधर गया वो? सो अच्छा, so we have created 3 layers, got it or not? We have created 3 layers. First layer is circle layer, second one is rectangle layer, third one is dimension layer. 3 layers we have created. Okay, so next is when you will click on the in the window, you will see there is an option layers, and when you will click the arrow, you will see all the layers which we have created. You will see here in front of you. Okay, done. No, by default layer is white layer, that is 0 layer, that is already by default layer. Okay, now for example if we want to select the layer, for example circle layer, we want to draw all circles. Now for example we want to draw circles, so first we will select the layer, circle layer. Otherwise we have to shift, first we will draw all the things in 0 layer and then we'll shift it into circle layer. That process also okay, but that is time consuming process. Okay, I will tell you how to do that. If you do if you will draw the circle in rectangle layer, for example, so how to shift that circle into circle layer? So I will repeat this, but keep it in mind that best option and suitable option, feasible option is that just if you want to draw the circles, just first select the circle layer and draw everything in that layer. So we will select the circle. First option to select the circle is go to layer properties again in the format layers, and then just click the circle and click the circle, and you see is the in the top there is a set current, and click set current, and close it. You will see that here in the window circle layer is selected. Got it? Again you will go to format and layer option, and in layer option you will see that we want to select the red circle layer. Just select the circle layer, and then there is an option, there was a new layer option, delete layer option, and then there is a current layer, set current. So you will click the set current. First select the layer which you want to select, and then click set current. Set current means now that layer is set to current. Okay, that layer is active now. Okay, now by default layer is circle layer. जी डायरेक्ट भी हो जाता है, वैसे बताया कि ये तरीका है। ठीक है, तो वरना डायरेक्ट कर ले, जस्ट सेलेक्ट ऑन द लेयर, यू सी देयर इज एन ऑप्शन, जस्ट क्लिक हियर एंड यू कैन आल्सो सेलेक्ट इन दैट वे. ओके,
circle layer is active now. वो नहीं हो रहा है? हो गया, बाकी डन। श्रीलंका हालात ही बड़े हमारे भी उधर ही जा रहे हैं। चलें जी, सर्कल लेयर इज एक्टिव। Who have activated circle layer? Very good. चल, now select the circle and draw circle like this. Draw one circle, smaller circle, bigger circle, larger circle, again like that. Now one thing you have to see that weight not change because we also change the line weight. Color is changed, is okay. Line type is changed because now is the center line. Circle is drawn with the help of where the center line is okay. But line weight we change line weight to 1 mm. But line weight not change. किसी का हुआ change line weight? किसी का भी नहीं हुआ ना? 1 mm तो हमने काफी thickness रखी थी इसकी, ऐसे ही है ना? नहीं हुआ? किसी का भी नहीं हुआ? किसका हुआ है? लैपटॉप पे हुआ है? अच्छा, और आपका भी लैपटॉप पे हुआ है? अच्छा, इस पीसी पे किसी का हुआ है? इस पीसी पे ये जो AutoCAD वाला आपका हो गया? ये यूनिट्स पे डिफरेंस होता है। अगर आपके यूनिट्स इंच में लगेंगे ना 1 मिलीमीटर के दाम पे डिफरेंस मिलेगा। बट यूनिट्स है ना ये छोटे बड़े यूनिट्स नहीं होता, तो फिर हम यूनिट चेंज करें या इसका और क्या हल करें? थिकनेस हमने बढ़ाई है यार, बढ़ना चाहिए। देखिए ना, थिकनेस पहले बाय डिफॉल्ट थी, उसमें भी तो इंचेस में ले रहा है ना, तो इसमें वो भी इतना ही लेगा, इसको थिकनेस बढ़ाइए फिर भी इतना ले रहा है, ये क्या चक्कर है? बढ़ना चाहिए यार, ये नहीं चाहिए। अच्छा, इसका ऑप्शन जो 2019 ये लेटेस्ट वर्जन में है, द ऑप्शन इज इन द राइट बॉटम देयर इज अ 3 लाइन yeah, customization. Bottom right, you can see my screen. Bottom right in AutoCAD, bottom right corner, right most option, you can see that there are 3 lines, and there is when you will move the cursor on that lines, it will say customization, and when you will click it here, you will see one layer. There are multiple options, model space, grid, everything, and some are selected, or means some are activated or checked, and some are unchecked. Got the point or not? इस पे देखें, इस पे just go to line weight. Line weight is unchecked. Line weight is unchecked. Just check it. हाँ? आप उधर ढूंढे, आपको उधर आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। ये देखें ना, इनका लाइन वेट आ रहा है। यस, गुड, या वेरी गुड। लाइन वेट यू हैव टू राइट क्लिक फॉर द ओल्ड वर्जन, जस्ट right click in the bottom, just right click options, and here for the new in the right bottom option there is 3 lines, just click it and you will see there are multiple options, and line weight is on. You have the option O snap, O track, और एक ही ट्रे है अपने, क्या कहते हैं इसको, ये बॉटम बार, इसका नाम क्या था हमने लास्ट टाइम लिया, ये जो जिसमें ओ ट्रैक, ओ स्नैप, ओ स्नैप लेवल का नाम क्या था शुरू में, पहले इंट्रोडक्शन में हमने किया था, कोई बता दे इसके, जो बॉटम की लेयर नहीं है जहाँ ओ स्नैप, स्नैप, ओ स्नैप, ग्रिड, आर्थो, पोलर, एवरीथिंग अवेलेबल इन द बॉटम, दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रे कहते हैं, ट्रे कहते हैं सर, क्या कहते हैं, ट्रे कहते हैं सर जी,
ट्रे कहते हैं सर। टास्क बार कहते हैं। और कोई? ट्रे कहते हैं सर जी। ट्रे, ट्रे है। या सर ट्रे कहते हैं। अच्छा, और कोई? आपने क्या कहा? टास्क बार, ठीक है। ट्रे, चलिए ट्रे कह रही है, टास्क बार ट्रे होता है सर जी, उधर लिखो। स्टेटस बार, मेरे ख्याल में स्टेटस बार ज्यादा सर जी इधर लिखा हुआ है। चलिए ट्रे वाली भी ठीक है, ये ट्रे भी है, ठीक है। स्टेटस बार है वैसे वाली, ठीक है। स्टेटस बार में वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये जो आने की आते हैं। वैसे स्टेटस बार के अंदर ना वो स्टेटस बताता है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह ना, मैं उस वजह से इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो ट्रे कह लें या जैसे, चले सर्कल ड्रा line weight, just check line weight and you will see here there is a line weight option is okay available here, but it is again not highlighted. You see here in your version, you will see my screen. So line weight is off. So again click this line weight, you will see line weight is changed. Now you will yeah, here the LWT, you will click LWT, line weight is changed. Now that line weight which you have specified in the circle layer, now it is applied. Or not? Very good. क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो आप लाइन वेट पे एक्टिवेट करें, इसी पे है ना। अब राइट क्लिक किया इधर से, बल्कि राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, लाइन वेट आ रहा है बस उस पर क्लिक करें और लाइन वेट ऑन हो जाएगा बस। अगर फिर भी चेंज नहीं हुआ तो आपने लाइन वेट ही उतना दिया था जितना है, बस सही है ना। फिर आप लेयर्स पे जाके जस्ट गो टू लेयर्स एंड चेंज लाइन वेट। Maybe you didn't change the line weight. How to change the line weight? I will repeat again. Your line weight is active now, is on, like O snap on, O snap on, ortho on, like grid on, snap on. No. It means you will just on line weight, LWT. Just one time click it and just wait it, because these pieces are slow, not so fast. So just click it and wait. Maybe after few seconds in the command window, it will show on, LWT on. If you will frequently click one, maybe again off. Okay. Now you have drawn the circle in circle layer. So the line weight changed or not? Okay. कुछ नहीं हुआ. So now maybe your line weight is you didn't change the line weight in the layer. Okay. Now we'll go again in the circle layer and we'll change the line weight. Okay. Because if line weight is active, now line weight should be. हाँ वो करते हैं. Go to layer properties. Okay, less कर ले 1 mm. Okay, 1 mm less than 1 mm. Okay, 1 mm 0.5 mm. Again I will say point. You see my line weight is changing. 0.5. अच्छा अगर ये नहीं हो रहा ना, इसका वो हाल तो नहीं है कि इसको पहले सेट कराने दूसरे को करें, अब इसको चेंज करते हैं. अच्छा हाँ, ये लॉक तो नहीं कर दिया आपने. अच्छा ठीक है. ये तमाशा है यार. ये हो गया ना यार. 0.35, just change 0.35. 0.35 change, yeah. It change, huh? Change हो गया. So it's changed, huh? Done? नहीं यार, इनको साथ किसका हो गया? आपका हो गया?
आपका हो गया आपका? ए भाई ये किधर बैठा यार, मेले मेले पे आया हुआ यार, इधर देख। किया कर हो गया होगा, उसको बता देना यार, पीछे में बताना, लीडर है यार, खुद ही बता दिया। क्या चीज बोला? लाइन वेट नहीं चेंज हो रहा। 0.35 पे करें। 0.35 करें जरा, जस्ट सिलेक्ट 0.35, 0.35। पॉइंट 35 कर दें, कभी कभी ये नहीं चेंज हो रहा, आप साइज कम कर दें और कम कर दें, 0.1 कर दें, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा आप वो देखिए, इसको सेट करंट करके देखें फिर चेंज होता है, सेट करंट का इशू तो नहीं है, अगर हम अपलोड करेंगे। अच्छा इस पास को आप चेंज करें, 0.9, हाँ नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हुआ, अब आप इसको सेट करना करें, सेट करंट ऊपर वाले करें, आप नीचे वाले का चेंज करें, दोबारा करें, कोई और करें। अच्छा इसको गौर से देखें, इधर आपने कोई लॉक शॉक नहीं कर दिया, ये क्या चीज़ है? लॉक, ये लॉक तो नहीं है, लॉक भी नहीं है, फ्रीज भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये आप फ्रीज पे क्लिक करें जरा, अब हुआ है फ्रीज, हाँ बस ठीक है, नहीं है, इस पे क्लिक करें और है बस ठीक है। ये सर जी आज इसी तरह ही चल रहा है, वो जब रीनेम किया उसमें 6-7 क्लिक किया था। अच्छा नहीं हुआ ना, आपका नहीं हुआ? किस किस का नहीं हुआ? इनका भी नहीं हो रहा, बस ये ऑटो कैड रीस्टार्ट करनी है, अभी आप लेयर बना ली हमने, इसलिए हम रीस्टार्ट करेंगे, दोबारा बनाएंगे, तो आप हौसला करें, तो दोबारा बना लें, ठीक है, फिलहाल मैं एक दफा ट्राई कर लूँ, अगर बन गया नहीं तो रीस्टार्ट करेंगे।
आप ना इसका नाम चेक करता हूँ ना मैं, और उसको सेट करंट करता हूँ और नीचे से ये अनचेक करता हूँ ना, कैसे हुआ क्या क्या क्लियर जो है, इसको जो है ना आप अनचेक कर दे, जस्ट अनचेक दिस बॉक्स, देन इट विल बी अप्लाइड। किसी का अगर इशू आए तो अच्छा इस बस ठीक है। और फिर भी इशू आया तो फिर उस लेयर को सेट करंट करना है, जस्ट सेट करंट दैट लेयर फर्स्ट and the box uncheck that box both at once and both alternatively, both you can try. First you will only set that layer, set current, change it. If not changed, okay, you uncheck the below box, okay, bottom left box, apply to layers, you will uncheck it. So again apply is apply. Problem is solved for both of guys. Okay, okay, done. Now circle layer is selected. Okay, close it. Okay, circle layer is done. Now go to layer properties and set current rectangle. Rectangle set current. Rectangle set current. Okay. Now you will see rectangle, yellow color rectangle is active now. Okay. You will see in front of you. Now yellow color is active. Now we will draw the rectangle. Just go to rectangle and draw different rectangles of different shapes. Okay. Different shapes. For example, like this. So you have drawn different rectangles. Done or not? Done. Very good. सर्कल का हाँ सर्कल पे चढ़ा करेंगे तो येलो ही बनेगा ना। देखिए ये लेयर आपने येलो बना दी है, बस इस लेयर को कोई पता नहीं कि आपने क्या ड्रा करना है। वो तो हमने कहा कि ये रेक्टेंगल ड्रा करें, वो तो इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है कि उसको पता चल के रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो हमने नाम रखा है ना। तो अब रेक्टेंगल ही आपने ड्रा करनी है, आपको पता है कि रेक्टेंगल ड्रा करनी है, आप सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल ड्रा कर देगा इस लेयर पे। Okay, so this is rectangles we have drawn in this layer. Okay, now color lagi hoga na, circle layer was red, we have set circle with red and different line weight and different color, different line type, and when we have selected the rectangle layer, that color is different, we already set different color everything. So if you will draw the rectangle dotted area, you have select the line type dotted, so no problem. If you will select the line type, load the line type continuous, it will be continuous. Okay, it depends on you. Now go to layers, and there is the third layer, dimension layer. Click the dimension layer, set current.
Now dimension the all the circles. Few circles you can dimension it as radius, few circles as diameter, and few as third was what? Third was jogged. So yeah, just dimension the circles. One circle with the radius, for example, here radius. Okay, done. The other circle, for example, diameter, like diameter. Okay. The third circle is jogged. Lit. Press enter, then dimension style window will be opened. Otherwise, go to dimension and there is a dimension style option. Click it and modify. Just modify. Okay. Modify. And in modify, you will see there is a fit option. Oh, no, fit में कर ले. Fit में देखें. Fit में जरा try करते हैं. Go to fit option, and there is a right bottom. There is a scale for dimension feature. Use the overall scale of 1. You can write it 5, for example, 5 and okay and close. No, it's change or not. So just scale it from the fit. You can scale it, or otherwise you can also other option already discussed last time. Yeah, go to dimension. This time you can write D in command window. Also click and dimension modify. Just go to modify, and here you can see there is a fit option, line, symbols and arrows, text, and fit. Fourth option is fit, and in the fit option there is a right below the drawing. You can see there is an option scale for dimension features. This is the option, and here you see there is use overall scale of 1. You can change it to 5, or for example I will say 3, and okay and close. You will see the scale is changed to yeah? अच्छा, ये डायमेंशन चूंकि हमने ना डायमेंशन की लाइन की वेट बहुत ज्यादा दे दिया है. सो ओके, go to line properties, layer properties, format layers, and go to dimension and line weight. Just line weight, click line weight and reduce it to 0.15 is enough. 0.15. Okay, and close. No is okay. Apply and no is okay, huh? Because line weight was with लेयर की पॉइंट में layers में dimension layer line weight you can reduce it जितना मर्जी कर ला यार 0.15 for example. Done it. No, go to dimension and dimension quick dimension. We are repeating the previous previous commands as well. Okay, quick dimension for example, and we want to dimension one side of the rectangle. Okay, just click the length of the rectangle, press enter and play again. Move your mouse beside the length of the rectangle and click left. Now dimension is placed by using quick dimension. Okay. Now go to dimension, linear dimension. This second side of the or width of the rectangle, you will apply linear dimension. Just again go to dimension, and there is a aligned dimension, aligned. And for example, now the third rectangle, you will dimension diagonal of the rectangle. So you can dimension. Okay. You can dimension rectangles, size of rectangles, diagonal of rectangle with the help of align dimension. Quick dimension also possible for linear dimension, like that. So it's okay. And also go to dimension, quick dimension. You can also dimension the circle. No. वो रेडियस नीचे ऑप्शन भी कोई नहीं आ रहा.
Okay, done. Okay, now you will see there is a dimension that is go to format, and then there is a layers, and here in the dimension there is a one bulb. See, bulb mean on off, and if you will in the top, you will see in the top of the layers, you will see there is a on is written. Now the second column, you will second option is freeze, and then change the third column layers. All the row and column close to each other. Okay, just wide it. Increase all. Okay, first increase all. ये करें करके दिखाएं. Freeze, layer, color, line type, line. No, everything is okay. On is okay. Freeze, lock, plot, color, line weight, line type, line weight. Okay, so everything is okay. ये देखें, इधर ये कॉलम है. आप दिखाएं इधर. ये कॉलम का पास इसको थोड़ा बहुत ज्यादा करने रहा है. ये देखें, ये इसको थोड़ा just column की width, change the column width so that the text should be visible. Whole text should be visible. Nothing else. Okay. Okay. Now first column is on off. Okay. First column is on off. Just click the dimension off. Just click it again. Turn the layer off. Okay. Click it. So you see all the dimensions are off. Done or not? Very good. All dimensions are off. Again, switch on it. Switch on it. इसको विंडो को साइड में कर लेता कि सामने नजर आए. अच्छा, switch on it. Just on. You see all the dimensions now on. Okay. Now on. Again off. The current layer will be turned off because why this indication that because dimension layer is the current layer. Better to change the current layer first. Okay, it is better if you want to change the current layer first, because this is the current layer. If you will switch off, it will show the indication, it will show the warning that your current layer will be off. Is okay, no problem. You can say yes. Otherwise, you can, if you want to hide this option, you can, for example, 0. Just click on the 0 by default layer, set it current. 0 layer by default layer. Just set it current. Okay. Then this option will not appear. Now go to circle layer, dimension layer, and switch on, switch off. You see that option not appearing, and dimension line dimensions are off, on, off, on. You see in this. Okay. Got the point? In 2007 you also click the apply button. Otherwise it will not be on off. Okay. Just click the on off bulb. This is the symbol of bulb. Okay. Just click the bulb. You will see bulb is dim, fused. But then you will apply. Click the apply button for the old versions. Newer version, no need. So it will be off. Okay. अच्छा, फ्रीज का क्या होता है? फ्रीज से क्या होता है? वही काम हो रहा है, इसमें फर्क मुझे नहीं लगा. उधर फर्क देखिए क्या है फर्क. ये फ्रीज करके अप्लाई करने वही काम होगा. चलिए नेक्स्ट. Okay. So switch on dimension layer. Okay, switch on. Okay. Now go to lock. Just go to lock. Okay. Lock. Just lock it. Dimension layer lock. Very good. Yeah. आपका रोल नंबर क्या? 52. वेरी गुड. ठीक है. चले अब
लॉक कर दिया आपने, लॉक, just lock it and close it. You will see now you want to delete the layer. Just delete the layer, select the layer and delete it. It will not be deleted because it is locked. Okay. Yeah, lock the dimension layer and then okay, close this layer window and then go to dimension and dimension. Just click that dimension and try to delete it. It will not be deleted, okay, because it is locked. So you will see circle can be deleted, rectangle can be deleted, but all dimensions cannot be deleted because you are locked. So in this way, if you want to lock the dimensions just to avoid any delete, for example, so you can do like this. So you can lock that layer so you don't want to delete. For example, Control A, no Control A and delete. In the window, just Control A, select Control A and delete. Delete button. You see all circles, rectangles are deleted. But are not deleted. So that the all circles will be again available. Circles and rectangles. Control plus that again. Done. Okay, next. Now go to layer properties again. Unlock it. Dimension unlock. Unlock. Okay, now you will freeze it. Just click the freeze button. Freeze में गायब हो जाती है. Change कैसे करें? Apply करें. Freeze करें. Apply करें. गायब हो गई तो change कैसे करें? फ्रीज का ट्राई करेंगे. फ्रीज में उसकी जस्ट ट्राई. क्या नहीं हो रही? डायमेंशन में डिलीट हो रही है. डिलीट हो रही है, लॉग नहीं हुआ. चलिए लॉग दोबारा करें इसको फिलहाल. अच्छा, जो ऑप्शन पहले हम हैव डिस्कस फर्स्ट ऑप्शन फॉर एग्जांपल ऑन ड्रॉप किया, देन अगेन दोबारा सेट कर देना अपनी प्रीवियस वैल्यू पे, प्रीवियस डिफॉल्ट वैल्यू पे. ठीक है, ऑन कर देना है. इसलिए फ्रीज है, अनफ्रीज किया है. फ्रीज किया है तो उसको अनफ्रीज कर दें दोबारा. जब अगले स्टेप में जाए, व्हेन यू गो टू नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस स्टेप शुड बी बाय डिफॉल्ट वैल्यू. ओके, ये ना मिक्स कर दें हर चीज की. आप उधर ऑफ किया हुआ, इधर ये किया तो खिचड़ी बन जाए. ठीक है, पिछला जो ऑप्शन है उसको आप बाय डिफॉल्ट कर दें. फ्रीज का भी बताते हैं. पहले लॉक का आपका नहीं हुआ ना. लॉक का दोबारा ट्राई करें. लॉक ऑप्शन हु हैव डन लॉक. When locked, that layer, when you will try to delete it, it will not be deleted. Huh? अच्छा, only on option is done. Lock is not done. आपका हो गया. इधर देख रहे यार, आप इधर देख रहे, जल्दी बता दें, इनको बता दें. एक्टिव हो ना. डायमेंशन डिलीट हो रही है, क्योंकि डायमेंशन का लॉक किया वो डिलीट हो रही, बाकी सारे नहीं. ऐसे ही होना है. हमने you have only activated, you have only locked dimension layer. So dimensions will not be deleted. Everything will be deleted because that are not locked. आपको नहीं समझ आई, आप बताया इनको, लाल करेंगे. आपका हो गया, इनको बताएं जरा. ये
So lock and on, two options we have discussed, okay? Don't try freeze. Freeze I will discuss later, okay? Only on and lock. Only you have to learn today. क्या चीज? On and lock. Only two options you will try. On is done, on off, and lock unlock done. You have tried. Yeah, okay. Just wait. PDF. Window. Enter. Okay. इसको प्रिंट करना ना, हमने इसको प्रिंट में नहीं लाना, सही है? फिर ये ऑप्शन है, ये दोबारा पहले प्रिंट में ऐसे ही लाते हैं सिंपल। डन और नॉट? नहीं हो रहा है? आपने रेक्टेंगल लेयर में डायमेंशन ड्रा की थी, आपने डायमेंशन पहले एक्टिव करना था और साइज ऐसे है इसमें की गई शुरू डायरेक्ट आप जो इस लेयर पे करना है तो यही मसला होगा। अच्छा चलिए, अगर ये मसला गलती हो जाए, ये गलती हो गई चले, अब इस गलती को पहले सही कर लें, ठीक है? अच्छा हमसे गलती होगी, फॉर एग्जांपल गलती ये होगी हमारी के हमने ये कर लिया, अब ये गलती रखें, अब इसको सेट करते हैं। अच्छा आपका क्या हुआ वाला, इन्होंने ना रेक्टेंगल ही एंड शी एक्टिवेटेड रेक्टेंगल लेयर and then they applied dimensions, okay, to objects. So this is wrong. So first you have to select the layer. Okay, go to rectangle layer. Rectangle layer. Just set the rectangle layer, set cron. Okay, done. Now in the rectangle layer, actually we want to draw the only rectangles, not dimensions. But now we will dimension it. This is wrong, but we will dimension it. Go to dimension, linear, and dimension the any rectangle. Dimension any rectangle like this. So it will be yellow because now you are doing dimensions in the yellow layer. That is the rectangle layer. Okay. So rectangle layer. Now we are doing something wrong. Okay. Then we'll try to correct it. Okay. So go to rectangle layer. Just activate rectangle layer. And now go to dimension and dimension any rectangle. For example, you have dimension this rectangle. One side, then again dimension, other side like this. Okay, done. Yeah. Okay, now you have done wrong. You will follow me. Okay, follow me. You do follow me. Others have done or not? Just activate rectangle layer and dimension. Apply dimensions, any one or two dimensions. Okay, done. Now go to layers, format layers, and you will turn off rectangle layer. Turn off. First, okay, turn off. Or you can first set zero layer as set current, so that no problem you will face. Then go to rectangle layer and turn it off. When you will turn it off, you see that all the rectangles are off, but two dimensions are also off, which are drawn in the rectangle layer. Got the idea? Yeah, very good. It means that two dimensions we have mistakenly drawn in the rectangle layer, and we want to shift those two dimensions in the dimension layer. We want to shift it. Okay.
Okay, switch on again. Switch on rectangle layer. Now these two dimensions which are off now, it means the two dimensions are drawn in the rectangle layer. We want to shift it into dimension layer. What I will do? Okay, follow me. Follow me. Close the layers and just select those two dimensions. Now you select the rectangle layer. First, select the rectangle layer. Go to line properties, rectangle layer, set current. Okay. Now rectangle layer is on. Okay. Rectangle layer is on. Okay. Now you go to two dimensions. Those two dimensions which are drawn in the rectangle layer, just select those. Just left click. Left click both two dimensions. Both dimensions. Left click. Done. अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप गो टू just select the dimension. Now you see the color is changed of those dimensions. It means those dimensions are again repeat again. If you want to select more than two dimensions in old version, you have to press the shift button on your keyboard. Okay, shift say na. Click and mouse left click, all dimensions it will be selected. But for older version, you are using PC, so press shift from the keyboard, press shift and hold it, and then select left click mouse on two dimensions. Both dimensions will be selected, or 3, 4, 5 like that. When you will select the dimensions, the process is again I will repeat. First, activate the rectangle layer. In which you have drawn, activate rectangle layer. Okay, done. Then select those two dimensions. Select it, and then go to in front of you. You see there is an option in front of you. No need to go to format and blah blah. Just click here and click the dimension. When you will select, you see the two dimensions which are yellow color in the rectangle layer. That is changed to green color. That is actually the color of the dimension layer. So it means now these two dimensions are in the dimension layer. Done or not? Done? आपका हो गया? आप करें ना? Done? No, just try. Check whether it is okay or not. Okay. No, we will not go to format and layers. We will directly on off from here. Okay. We have the option in front of me. You see there is a arrow and you will click it. All the layers are here. And you will just just turn it off. You see, when your rectangle layer is off, all rectangles are hidden, but those two dimensions which are drawn in the rectangle layer are not. Because they are shifted to yeah. In the older version, you will switch off, and then you will click your mouse in the window, then it will apply. Okay, the changes will apply in that way. But in the newer version, just click, it will be applied. But for the older version of AutoCAD, you are using this PC, you will switch off, turn off that layer, and click your mouse in the window. Then it will be applied. Anywhere in the window, then it will be applied. Changes will be applied. Okay, got it? Done or not? So in this way, you can shift any, if you have done any wrong in another, you can your that try the previous specified layer where you want. Now, okay, turn on rectangle layer, turn on. Okay, turn on. Okay, done or not? ये हो गया?
तो यही बताना था मैं। किसका नहीं हुआ? Who have done? आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। करे यार प्लान वगैरह बनाने में डिफरेंट वो लेयर्स हैं उसमें अपने डोर्स लेदा विंडोज लेदा इस तरह चीज वॉल्स का लेदा देख ही नहीं चलेंगे। नेक्स्ट 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 जिसको नहीं समझ आ रही कैन कोलैबोरेट विद योर नेबर। ओके जब क्यों का हो गया तो उनसे कोलैबोरेट कर लिया करें, जल्दी जल्दी कर लिया करें खुद ही, ठीक है? वरना एंड पे बताऊंगा और साथ बीच में नहीं बताऊंगा, बस इसका नहीं हुआ एंड पे, ठीक है? चलें गो ऑन। अच्छा नेक्स्ट इज नो यू विल फॉर एग्जांपल lock is done. Okay, now go to format layer and for example you want to change the line type of dimension layer. Okay, line type of dimension layer. Okay, click the line type of dimension layer, load it and select continuous. Load, no need to load because continuous already there. Just click the continuous and OK. And you will see all the dimensions are now continuous lines. Done or not? Done? Who have done? Farmer Sri Lanka. Today you're not active. Done? Okay, next. Now continuous line is okay. Now want to change the color. Click the green and click it, for example, purple. Purple है क्या ये? Magenta. Okay, magenta. Okay. Apply it. You will see all the dimensions are now in magenta color. Done or not? So in this way, quickly you can change anything. Okay, in the layer. Done. Very good. Okay. Next. Line type change. Line weight we want to change. Okay. Go to line weight and 0.15. Just select it 0.4. Click OK. You see line weight change. Done or not? Well. So this is done. No. Okay. Very good. Okay. Now on off is okay. Lock is okay. Lock unlock is okay. Now there is an option of plot. There is an option of plot in the layer. Just go to format layer and there is a window and you see there the fourth option. 1, 2, 3, 4. Fourth option plot. Got the point? Now this plot option is on. You can say on. Okay. तो आपका आखिर में आप प्लॉट ओके इसको भी छेड़ना नहीं है, क्लिक नहीं करना, जस्ट नो डोंट क्लिक दिस. ओके नो क्लोज दिस लेयर ओके कंट्रोल P प्रिंट की कमांड. ओ भाईजान थोड़ी बात करो तो टाइम ज़ाया कर रहे उठ जाओ एक राउंड लगा के कॉलेज की बात. अच्छा control plus P, this window is appeared or not? Okay, very good. Now here there is an option printer and plotter and the name is none. Just click it and click the drawing to PDF, the last third option, third last DWG to PDF. Okay, done. Okay, then paper size is okay, ANSI, A size, paper size, we don't want to change it. And then there is an option display, what to plot, okay? What to plot is display is okay right now. Otherwise you can also window when you will click the window, click window, okay, click on window, okay, click on window, you will see, you will go to this window and just select that window which you want to plot. You can selectively plot window, okay?
If you want to plot everything, then display option is okay. Otherwise, you can like that. Okay. Now, okay, window is done. Now there is a center the plot. Click this, check this box, center the plot. Okay. Okay. Click the preview button. Preview will be printed like this. Okay. This is our print preview option. Done or not? Yeah. Center the plot. Please check this box. Okay. Again. Escape. If you have done escape, press escape. You will go to the original window, black window. Okay. Control. This window will appear. Control P. This window will appear. Then there is a name. You can DWG to PDF. Okay. DWG is the drawing. AutoCAD drawing to PDF. I want to change. And then there is a plot area. Plot area you will display. This time I will click display, not window. Okay. And center the plot. You see, if you will uncheck the center plot, you will see X is at 0, Y is at 2.07. Okay. So if you will check this, then both will be done. And then preview, just preview. You will see everything is displayed. Done or not? सेंटर ना करें, सेंटर को छोड़ने उसकी टेंशन ना लें, करके देख लें ना भी करें, ठीक है, दोनों कर, वो तो जस्ट उसकी लोकेशन को चेंज कर रहे हैं. सेंटर द प्लॉट चेक और अनचेक both you can try. Okay, just preview this one. Done or not? Who have done this? Okay. बातों में ये कच्चा एक्सटेंड Okay, done or not? Done. Okay, now again go to format, layer, and in the layer you will go to for example, now you will plot the command. There is a printer option. You will click it, you will deactivate it. Okay, which layer you have deactivated? Rectangle, huh? Okay, dimension. Okay, dimension. You just plot dimension. You will deactivate plot is will be no plot. Okay, just click plot. When you need, just preview. You see, dimensions are not appearing in the print preview. Okay, so whatever which layer you don't want to print in this way. Done or not? Okay, next, escape. Now again you will activate that plot. Okay, so that the dimensions can be printed. In this way, if you want to deactivate unplot, you don't want to plot circles, then you will click the deactivate plot of the circle layer. Okay, in this way you will do. Done. So one layer में if you have done mistakenly something in another layer, you can shift that serial to drawing in the correct layer. Okay, this we already done. Okay, so layers lab 8 is done. Now the next one is lab 9. Now you will do these tasks. For example, lab 7, lab 8 task 1 is this one. Okay, here you see develop the layer of ellipse. Now you will draw this for example layer of ellipse. All the ellipse you will draw in the ellipse layer. Okay, and circles, all the circles you will draw in the, I am talking about task 1 of lab 8. So all the circles you will draw in the layer of circles, and all the lines you will draw in the layers of lines. Yeah, lines you can also draw, and dimensions and fourth layer. You will create the 4 layers and you will
do this in that way. Okay. So lab task 1 will be okay. Lab task 2. Draw the diagram mentioned in this using the appropriate. Develop the layer of circles. Yeah, circles, lines, and dimension. 3 layers. For lab task 2, you need 3 layers. Okay. So all you will do this. Okay. Lab 8. And lab 9. Sorry. So in lab 9, there is a orthographic views. Orthographic views. Now we want to draw 3D object in different views. Front view, top view, or we can say top view, or we can say plane view. Plane or top is same. And front view and right view or side view, you can say side view, whether it is left view or right view. Okay. So we want to draw. There are 2 methods to draw these. These are orthographic projections. Okay. So how to draw? It means 3D object. 3D object. You have the 3D object, and you want to draw different sides of in 2D. You want to convert this object into 2D actually. Okay. So there are different views. 2D different views. How to draw this? If you are, for example, I have this register. For example, I have this register. Okay. And now, for example, this register is in this way. I'm in front of this register. Okay. So front view is this rectangle. This will be the front view, and side view will be this right side and left side, 2 side views. Okay. That's view. I have to place it at one location.
You see, there is a this figure we will draw, okay? So I will follow step-by-step process and you will follow me, okay? Okay, let's start. New, for example, new. And you see in the front view, you will see the bottom 3 rectangles. Yeah, or not? In the bottom, in the front view, you see in the bottom, there are 3 rectangles actually, and each rectangle of 25 length. Got it? And screen देखे मेरी नेट स्लो चल रहा है इसका दूसरा तरीका क्या है व्हाट्सएप पे शेयर करो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ दोबारा मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी शुरू कर रहा हूँ अभी बस चले ये व्हाट्सएप पे शेयर किया पिक्चर जरा देख Yes, done. Okay. In the front view, you will see front view. I will right. View will be to the first front view. Okay, front view is in front view 3 rectangles. I will start from the left, and the length of the rectangle is 25. And got it? Now I will draw line command. Just go to line command, and I will click it here. Line command. You will follow me. Line command, and then should be on, and just click the line, click the first point, and then just horizontally towards right, just move your mouse and click only 25. 25 line is done. No need to write and bend. Okay, done. Done. I'll repeat. Okay. 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 The next one, you will not end. Again, third is 25. Again, enter. Third line is drawn. Okay. Now to the top, move your mouse vertically up and right 12. It is done 12. Now move your mouse towards left like this and just use the O snap. If O snap is on, you can just you can join the lines. No rectangle is drawn. Done or not? No, you will follow me. You can do this later on. Okay. Just see. No, in the bottom, why I have drawn 3 lines in the bottom? Because these 3 lines are rectangles. अब देखिए हो रही है कब से नहीं हो रही थी ठीक है अब होगी अब हो रही है बाकियों की हो रही है क्या चक्कर है हो रही कि नहीं
दोबारा शेयर कीजिए। रीजन कर लेना यार। ये line ओके डन फ्रॉम द स्टार्ट। जस्ट ये समझ आ गई जो इन्होंने किया है? किसको समझ आई ये बताएं? बस कुछ को आ गई, आपको नहीं आई? ये लाइन ड्रा होगी रेक्टेंगल्स, नीचे लाइन की 25 25 25 25 12 देन मिला दिया बस। अब जो 25 फर्स्ट लाइन है उसका एंड पॉइंट ओ स्नैप शुड बी ऑन, देन एंड पॉइंट विल बी विजिबल। सो जस्ट गो टू लाइन कमांड एंड द फर्स्ट लाइन एंड पॉइंट, just first line end point vertically connect vertically to the top line. Now first part of rectangle done. Now go to line, the end point of single line, just connect it vertically to the top. Now 3 rectangles are done. Done or not? दोबारा कुछ नहीं होगा भाई, इधर करें। एक दफा बताऊंगा, अभी फिर एंड पे समझाऊंगा, फिलहाल एक दफा देखें गौर से बस, जिसको ना समझ आई वो बाद। अच्छा ये डन किसका हो गया ये? अच्छा चले, अच्छा 3 रेक्टेंगल ड्रा कर ली। ये छोटी छोटी बेसिक मान सी, पिछली दफा अगर कुछ ने रिपीट किया होता है ना सही तरह तो ये वैसे ही समझ आएगी। अच्छा आगे चलें, ये हो गया। अब इसके बाद फ्रंट व्यू, जस्ट गो टू फ्रंट व्यू, यू विल सी देयर इज अ समथिंग लाइक दैट। इन फ्रंट व्यू इज ओनली यू सी हियर इन द फ्रंट व्यू you see just 25, right point just click here 25, then again click here 12 then again click here 25, 12 then here 12, then again click with the help of snap this video, then click from here like this, click here like this, done. Then there is a 25 and 20, 25 and 20, then there is a take a knife and I will meet it here. Front view is ready, so I can follow in. And I will click it here 20, and I will join it. So rectangle is first view is done. Now on to hatch it. So hatch it. I will hatch, draw, and hatch, and I will hatch it. I will hatch it, and I can change the hatch pattern. Maybe I will change the hatch pattern. Where is pattern? Hatch किधर है? ये है ना, ये अच्छा ये, हाँ वेरी गुड। इसमें वो उसी तरह का पैटर्न रखें जिस तरह का उधर है, ट्राई करें वही हो।
इसकी विड्थ चेंज कर लें, अगर ये है तो 5 कर लें, 5 करके देखें, ये देखें 5 भी है, 10 कर लें, 10 कर लें, 10 करें, ये देखें समथिंग उसी तरह की हमने ड्रा कर ली है, सही है। स्केल का ऑप्शन हाँ सॉरी स्केल का है ना ये, स्केल का, इसको 20 कर लें, ये देखें 20 हमने ये ड्रा कर ली। फ्रंट व्यू इज डन, हु हैव डन दिस फ्रंट व्यू, वेरी गुड, और किसने किया है? हॉरिजॉन्टल कौन सी, इधर लेफ्ट से तो लिखिए इधर, देखिए इधर से 20 है तो आप इधर से 20 लें, और फिर क्योंकि हमें स्लोप का वी डोंट नो द लेंथ ऑफ स्लोप, सो इनडायरेक्ट वे इज just go from left is 20, just 20 line and then meet it, that slope is done. So front view is done. Now you will do right view and top view by yourself, do it and place it, this front view just place the top view below this. How to draw the top view, I will try again. टॉप व्यू, अच्छा और बता यार टॉप व्यू कैसे करेंगे, अच्छा इधर से शुरू करते हैं, इधर से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है। अच्छा 25 की लाइन ड्रा करना, 25 टॉप व्यू आएगा हमारा, टॉप व्यू आएगा इसके नीचे, ठीक है, ऐसे ही है ना। चलें ड्रा काम है, और वो जो लैब 7 का टास्क है, टास्क 1 और टास्क 2 है ना, तो ग्रुप आपके हैं डी कितने ग्रुप है टोटल, D9 है ना सर, 9 है सर, 9 है ना, तो ऑड वाले टास्क 1 कर ले लैब 7 का, और इवन वाले लैब टास्क 2 कर ले लैब 7 का, और लैब 8 का ये वाला टास्क है, ये सारे कर ले, ठीक है। ये अभी करें तो मैं आता हूँ, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है, फ्रंट ऊपर रखना है, वो नीचे रखना है, इसके नीचे रखना है टॉप, और फ्रंट के राइट साइड पे आपने लेफ्ट साइड पे राइट रखना है, उसको बिल्कुल पहले बना लें इस डायमेंशन को, फिर आप इसको रखें जरा इसके नीचे, फिर मूव कर ले, मूव की कमांड से पहले रैंडम बना लें जहां भी बनता है, फिर उसके बाद उसको मूव करेंगे तो एग्जैक्ट उसके नीचे आएगा, क्योंकि डायमेंशन से कर रहे हैं आप, ये आप करें पहले। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने, जब ये हो जाए तो फिर आपने लैब 8 का जो है ना, लैब 8 का टास्क 1 ऑड वाले करेंगे, और टास्क 2 जो है वो इवन वाले करेंगे। टास्क 2 उसमें डायमेंशन नहीं है, वो रैंडम करना है आपको, तो डायमेंशन वाला हो गया तो फिर रैंडम वाला आप खुद ही कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आप करें, मैं आता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, अगर मसला हुआ अभी आप ट्राई करें, ठीक है। मैं भी लैपटॉप पे कर रहा हूँ, इसलिए